Okay, so this is day 32 of daily code log. Some prior context of last day. Uh, Yesterday we solved a contest on air, which was a bad idea. I had few comments saying that I shouldn't stream on live these contests, and that would promote to cheating and stuff, and which I totally agree. This was the first live stream which I randomly chose to do because it coincided with my daily stream time, so why not? But yeah, they have their valid points. I shouldn't stream these live contests, and yeah, there's a risk to it because if someone chooses to copy paste my code, my solutions may get skipped. So these considering these things, in future I won't stream live. And this video is recorded because my internet connection is not quite stable, so doing a stream would not do well. That's why today I'm just recording my session and I will just upload it. Today's agenda will be solving 1100 rated problems because uh, last day's contest problems are not live yet and their score is not ready yet, so I don't have them yet for up solving. Once maybe for next day. Okay, so yeah, let's solve two problems. And so I'm sharing my Brave browser screen. Let's see how fast we can solve these 1100 rated problems. Make it equal and pathless. You see, the internet connection is really bad. So yeah, this is a div 3 question, similar to last day's. Let me get my notebook ready. Phone silent. Great. Okay. Given two multisets S and T, given two multisets S and T of size n and positive integer k, may perform the following operation any number, putting 0 times on S. Select an element x in S and remove one occurrence of x in S. Then either insert x into S or insert x minus x mod into S. Okay, determine if it's possible to make S equal to T. To multiset S and T are equal if every element appears the same number of times in S and T. Great. Select a element in S and remove one occurrence of x in S. Okay. Then either insert x plus k into S
or insert mod of x minus k into s. Okay. Remove x to increase it or decrease it. Just we are increasing x or decreasing it by k. We will be given t and then k, the amount by which we are increasing or decreasing. We have set, and we have t is also set. So if it's possible to make both equal, yes, otherwise no. I have 1 and 3, so n and k of one size hoga dono. So either I can increase 1 by 2 or decrease 1 by 2, 1 by 3, that will lead to -2 and becomes equal. तो हो जाएगा yes है. दूसरा is 1 and 8, 4, 8, तो प्लस कर देंगे तो हो जाएगा. दूसरा भी yes है. 3 है and I have 5, so we can decrease or increase something by 5. So 6 plus 5 is 11, and 9 minus 5 will be 4. Okay. 2 plus 5 won't give 8, so this is no. Yes. Okay. So this thing holds the catch. So I'm processing it wrong. 6 plus 5 is 11. 9 minus 5 will be 4. And I'm left with, I want 8, right? So 2 plus 5 is 7. So it's happening. I have test case 3. Yes, yes, yes. Yes, yes, and this is, so say 6 minus 5 is 1. Okay, leave it there. And say somehow I अगर 1 हो जाता है, 5 जोड़ते 6 हो जाता है. 6 plus 5. पॉइंट नहीं है ना, अगर माइनस करके फिर सेम ही चीज़ प्लस कर रहे हो तो. टू है मेरे पास, उसको ओके 2 को 5 से माइनस करो 3 आता है. Oh, in negative direction we can pursue it, right? Yeah. एक ही है, but 2 is in the positive side. ठीक है, यहाँ 0 है, but in this direction 10 minus 2 can be also 8. So yeah, done. नेगेटिव साइड से भी 8 ला सकते हैं. 2 and 7, 2 तो सेम है and 7 को 8 बनाना है, but 2 को भी 8 बना सकते हैं. 2 2 8 9. ठीक है, I have 7, so 2 plus 7 is 9. ठीक है.
I have 2 plus 7 is 9. So क्या 8 को हम लोग 2 बना सकते हैं? I think this is no probably. Yeah. Okay, here I have 3 and 0 1 basically करना है. 2 का डिफरेंस अलाउड है. 1 minus 2 को 1 बना सकते हैं. -1 हो जाएगा. But no, not possible. Easy है. नेगेटिव साइड में देखना है, पॉजिटिव साइड में देखना है, सॉर्ट कर लेना है. 6 को हम 11 कर सकते थे. तो अगर इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखें तो 6 2 9 था और 8 4 11 हुआ. तो 6 was paired with 11, 9 was paired with 4 and 2 was paired with 8. So we actually don't know. So how do we choose something and find a fitting pair for it? एक मैप रख सकते हैं. ठीक है. You can keep a map. Because यहाँ पे दिख रहा था तो I did find कि कौन सा किससे पॉसिबल है. ठीक है, एक कर सकते हैं. 6 को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, 6 को फाइंड कर सकते हैं. अगर पॉसिबल नहीं है we can increase 6 by many folds until it matches something or exceeds all the thing. Okay, if we mod everything to 5, I have 1, I have 2, I have 4, I have 3, I have 4, I have 1. Okay, mod करने में मैच कर गया. Now 4 4 मैच कर गया. ठीक है. Now जो भी नेक्स्ट है वो क्या करेगा कि जैसे 2 and 3 there is a mismatch. So क्या करना है कि basically it shows कि the difference in जैसे 8 है तो 3 रिमाइंडर बच रहा है और 2 रिमाइंडर बच रहा है. तो can these two be made equal? तो yes, because 8 को it can be reached अगर 2 को नेगेटिव डायरेक्शन में उधर पुश किया जाए तो it can be reached. ये एक सडन थिंग था. अगर यहाँ पे जैसे जाए 2 8 है and 2 9 है and we mod it to 7 तो 2 2 तो मैच कर जाएगा क्योंकि 2 2 का mod होगा 2 2 बट इसका mod 1 होगा, इसका mod 2 होगा. 1 and 2 doesn't match. For those not matching, that means either they need multiple iteration. सही. जैसे कि नीचे वाला is 2, ऊपर वाला is 1. ऊपर वाले को
ऊपर वाले के साथ 8 के साथ we can add or subtract anything 7 anything नहीं 7 बेसिकली जो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो इट विल क्रॉस 9, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो 7 7 क्या क्या पॉसिबल है। 7 - 8 हो सकता है, 14 - 8 हो सकता है, 21 - 8 हो सकता है, 28 - 8 हो सकता है, 20 आ सकता है, 20 आ सकता है। उसके बाद यू से 1 पॉसिबल है, ठीक है, 1 पॉसिबल है। 8 + 7 7 15 पॉसिबल है, 15 इज पॉसिबल, ठीक है, 1 इज पॉसिबल। उसके बाद उसे क्या हो रहा है, ओके, आई विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट।
I'm back. That was a long break. Okay, so I have thought of an solution. But I still don't know how do I match them. Okay. What is the time complexity here? You have 2 seconds. And the input is not, input is big. But we just need to mod them, so it would be a really small number. What if k is a smaller number? What if k is a smaller number? In ABC, k is a smaller number like 3 and 2. Okay. Now 0 mod 2 will be 0. 0 and 0. Okay.
Number smaller than k won't need modulo. So 0 is 1. Okay, so we need two zeros and two 0 matched. Okay, now we want we need a map. And like 0 is matched. Now to have 0 we need 2 minus 0, that is 2. So 0 can only be matched if we have a 2 somewhere, so the other 0 cannot be matched. So this is a okay. In the first example we did mod of everything with respect to 5, so this will be 1, it will be 2, this will be again 4, 3, this will be 4, and this will be 1. 11 will be 1. So 1 and 1 is matched in map. In map, if we have we find and reduce, right? We find and reduce. So here we have a map, here we have a map. What are the different okay, let's try some coding. This was last day's code. Just want to see what are the multi-map and C++. If something useful pops out. Okay, so in this multi-map we can have instead of using a map we can use a multi-map. And in multi-set what we have, multi-set we have insert, erase, find, found. Font size and clear. I see. Multi-set won't help. NK, right? You have a specific need, right? So yeah, a map will do. But we need two separate maps, right? एक में हो जाएगा नहीं, खुद से ही कैंसिल करने लगेगा. So we need two separate maps.
we're just storing the mod of each value with respect to k so that we can check if we can get this or not. We have two maps where each occurrence is saved. Now the rule is same thing cancels out and both the map should be empty by the end of this iteration big of n. If something doesn't match, we can always get the other thing, right? So something doesn't match, you can always get the other thing. Let's see if we can do this. n times करते हैं. This particular element has no match, then we can break. So instead of finding everything, we find something that will break the system, right? And say multiple things depend on this one, that can also break the system. So the first one is a list of requirement, right? The map tells me whatever I need, right? The second map is the list what we have. So just second map is the list of things we have. So iterate on the first map and check if we have these or not. Element and its frequency. Okay. Element and frequency. Map 1. So while f minus minus, we need all the things. That's two possible things that can set off these elements. We need to find E exactly, or K minus E. And we want to match our F, right? Okay, so available equals to find me count.
मैप 2 में ई कितना है प्लस मैप 2 में के माइनस ई कितना है। Great. So these two things can be 0, and if available is more than required, then it's possible. Then we need to just subtract the int removed equals to mpp2 से सारा ई निकाल देते हैं, ठीक है, एंड mpp इसको 0 कर देते हैं यार। सारा नहीं रिमूव करना है, देख अवेलेबल है मतलब ये पास 10 राइट। एल्स काम करना है कि पॉसिबल नहीं है ऐसा कुछ सीन है क्या, नॉट पॉसिबल, नो, यस, ओके, ठीक है, अवेलेबल है तो जस्ट रिड्यूस द थिंग, अवेलेबल है तो
ये ठीक है, ये ठीक है। जस्ट आई नीड टू रिमूव, अगर ई ही अवेलेबल से ज़्यादा है तो जस्ट ई जो है इक्वल्स टू एल्सिफ जो दूसरा है वो अगर अवेलेबल से ज़्यादा हुआ, इक्वल भी हुआ, अवेलेबल नहीं, एफ जिस सब्ट्रैक्ट करना है, सेम कर सकते हैं यहाँ पे के माइनस ई के साथ माइनस इक्वल्स टू एफ कर सकते हैं। एल्स क्या करना है, दोनों का सम तो हो गई, तो MPP E is more than equal to MPP K minus E, थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या करना है कि MPP E माइनस इक्वल्स टू MPP माइनस E, क्योंकि वो ज़्यादा है तो जैसे 10 माइनस करना है, 8 और 2 है, ज़्यादा वाले में से 2 हटा दिए, ज़्यादा वाले में से जितना चाहिए और इसका वैल्यू हटाना होगा, तो चाहिए f, तो 10 माइनस 2 8 हटाना होगा, और MPP K माइनस E को 0 कर देंगे, एल्स सेम चीज़ बट रिवर्स। दिस शुड वर्क, देखते हैं। नो, यस, नो नो नो, 3 यस 2 नो होना चाहिए, ये तो सही है, ये नो गलत है, ये नो गलत है। देखते कौन सा नो है।
एक इक्वल्स टू होगा। मोर देन इक्वल टू होना चाहिए। Works. This can be done even better अगर मैश कर लिए सबको एक जगह ले आए, बट एक एक करके भी आइटरेट कर सकते हैं, एक लूप कम हो जाएगा। देखते हैं ये सबमिट होता है या नहीं। प्लीज हो जाए। हो जाओ हो जाओ हो जाओ। Oh, time limit exceeded on test 13. So it's working, but ये आ रहा है। It's working, but ये आ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? दो फॉर लूप है। This is another for loop. So TLE. एक तो वेक्टर में सेट कर सकते हैं। होता है ना कि they have test cases to skew your map. They have test cases to skew your map. I think I can use a vector and sort kind of stuff, right?
That will be a better time complexity could die. Don't think the time complexity is that crazy. It will trigger a TLE. Let me see what I can learn from this thing. As I thought, they designed the test case in such a way that it will crash a unordered map, causing मतलब skew tree जैसा बना देंगे. Constant hash collision होते रहेगा and it will give a n square. Okay. Okay. He's not small. This is getting hacked. That is the reason it's behaving like this. Yeah. This will give a constant, unhackable, robust n log n time complexity in worst and even best. But a unordered map on worst cases can go up to a crazy n square time complexity. So this is something that I learned today. So yeah. Let's see if this works.
Please work. Yeah, thank God. Thank God. Thank God. I got straight to the point and saved me. So yeah, this is a massive learning. I'm going to use directly map, not another map. When I know I'm going to get hacked or something like that. Oh, this was a good one. Now let's move to the next question. Let's see what did other people do. I think I did overcomplicate it. Let's see what my friend did. To multi-set and inserted the mod exactly like what I did. I'm just checking if see exactly. If found, erase from S. Else, find this thing. If found, erase from S. Else not found. This is an beautiful syntax. There's elegance in this code. Grandmaster level function is a thing in itself. Legendary Grandmaster. So yeah, I think I did it good. Just I needed to be fast. So just took a vector, again and vector. I sort them and check if both the vectors are. Whoa, this is a different one, but so let's solve this one and call it a day. It's already 1 hour. I believe, yeah, 1 hour 12 minutes. Is an array consisting of values 0, 1, and 2 and an integer s. It is guaranteed that a1, a2, and an contains at least 1, 0, 1, and 1, 2. Okay. Values like 0, 1, and 2, integer s.
Guarantee that at least these things Alice wants to start from index 1 and perform step then 1 to the right or left. Okay, left or right one step and reach index n at the end. Reach index n at the end. While Alice moves, he actually calculates the sum of the values she is visiting, and she wants the sum to be exactly s. Okay, left right move करके sum s करना 1012 से भरा हुआ. Formally, Alice wants to find a sequence ऐसा appendices such that ij should be less than 1 and n के बीच में होना चाहिए. j1 और m के बीच में होना चाहिए. ये दोनों का बीच में वैल्यूज ij, the value should be between 1 and n and j should be between 1 and n. डिफरेंस 1 होना चाहिए कोई भी एडजस्टमेंट एलिमेंट का. एंड सारे एलिमेंट का सम ऐसा होना चाहिए जो भी पाथ हम ट्रेस किए हैं. However, Bob wants to rearrange A1, A2 to prevent Alice from achieving a target. Determine whether it is possible to rearrange it none that Alice cannot find a target sequence even if Alice is smart enough. If it's possible, you also need to output the rearranged value. अगर possible है तो rearrange चाहिए. Test case है T, N and S. Okay. एन 50 के अंदर होना चाहिए लेंथ एंड एस सम जो करना चाहते हैं. ओके, दिस इज द इनिशियल सीक्वेंस 012 से भरा हुआ है एंड else wants the sum to be 2, right? Else wants the full sum to be 2, so not possible. Any rearrangement of A can prevent Alice from achieving a target. Alice wants to start from index 1 and perform steps left or right. Once से start करना है, left or right से move करना है. So लेफ्ट या राइट में जाना है and reach index n at the end. इंडेक्स n पहुंचना है. इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, बट रीच n है ना. ओके 33012
33012 था. So I want some 3. बोला not possible क्योंकि सम 6 चाहिए, इतना सम पॉसिबल ही नहीं है. मतलब achieving her target, for example 0 to 1. ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है. तो Alice can find the sequence 1 2 3 2 3 as a target sequence. तो 2 3 1 से आगे जाएंगे 2 पे, 3 पे, सेपरेट कर लेते तो हो जाता. नहीं होता क्योंकि 0 को पार करके जा ही सकता है. In this case, sum I want is 4. So 3 हो गया. कहीं भी मूव करेगा तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा, we want to exceed the sum in restrict the movement and next movement से उसका सम एक्सीड हो जाए, वही हम चाहते हैं. सम 2 है, तो अगर इस सीक्वेंस में रखा हुआ है 1 से हम पीछे जाएंगे तो नहीं होगा, उधर जाएंगे तो सम इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज वन वे वी कैन प्रिवेंट. जीरो को बीच में रखते हैं. 0 को पार करके जाएंगे, 1 हो जाएगा. 0 से अगर हम डायरेक्ट 2 में चले जाते हैं तो सम 2 हो जाएगा. इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आगे बढ़ते ही सम एक्सीड हो जाए. 1, ठीक है, 2 3 हो गया, वापस घूम रहा है इस साइड, +2 कर देंगे, है ना. ऑर्डर कुछ भी होगा, अगर घुमा दिए होंगे तो हम एंड तो आ ही गया, सम तो वही होगा. बट इसमें 10 चाहिए, तो 3 है, 3 है, फिर 6 7 8 9 तक पहुंच जाएगा. फिर एक बार 1 ट्रेस कर लेगा, 10 हो जाएगा.
यहाँ पे नाइन्थ अगर पहुँच गया है तो उसको 2 दे के 11 नहीं कर सकते। एक सीक्वेंस लिया, यहाँ पे एक बार आया था, यहाँ पे एक बार आया था, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 8 हुआ, 9 हुआ, वापस जाएगा तो 10 11 हो जाएगा ना। थ्री 5 6 7 8 9 This question is actually not clear to me. Array is guaranteed and P0 performance test of 1 right outer left which n reach index n as n. इंडेक्स n पे पहुंचना चाहते हैं, 1 से स्टार्ट करके इंडेक्स n पहुंचना चाहते हैं। n तक मूव करना है बिल्कुल। जो लास्ट वाला वैल्यू हो वो n के बराबर होना चाहिए। हम स्टार्ट 1 से करना चाहते हैं। अच्छा, पहला इंडेक्स 1 होना चाहिए, सबसे लास्ट वाला इंडेक्स n होना चाहिए। पूरे सीक्वेंस का पहला इंडेक्स 1 होना चाहिए, लास्ट वाला n होना चाहिए। कोई मिडिल इंडेक्स है, should be वन से n के बीच में कोई भी इंडेक्स हो सकता है ये पूरे सीक्वेंस में। j और j के सामने वाला जो भी इंडेक्स है वो दोनों एक दूसरे से 1 अपार्ट होना चाहिए। सारा वैल्यूज का सम होना चाहिए s। because I have 0 1 and 2 and I want to इसको सजा दिए 0 to 1 के हिसाब से, and arrange them in certain order 0 to 1। then I start from index 1 value 0 and move to index 2। ठीक है, 0 to 0 2 करके हम 5 बार कर सकते हैं and then move to 1, है ना।
कोई भी इंडेक्स देंगे तो 2 के साथ 2 पे मूव करके अगर इधर आके हम 9 पे फंस जा रहे हैं तो 2 पे जाके तो हम 5 बार 10 कर सकते हैं, है ना। छः हो गया, यहाँ आएंगे 7 होगा, 8 9 होगा, उसके बाद 3 7 हुआ, उसके बाद 2 8 9 हुआ, दस हुआ, 10 हो जाएगा। ओके, तो नॉट पॉसिबल कब है और पॉसिबल होने पर क्या सीक्वेंस देना चाहिए। तो नॉट पॉसिबल तब है ना जब इट्स 10 और इट्स 2, एल्स 3 के लिए हो गया, 6 के लिए हो गया, 4। नंबर है 20। क्या कर सकते हैं कि 1 पे अगर पहुंच गए एंड बैक I will get a 4, right? I will get a 4. 7 हुआ, फोर मिला। I can do this. So okay, this is the number. So why it's not possible? क्योंकि जैसे सीक्वेंस है, 8 तरह का सीक्वेंस बन सकता है। थ्री है, 3 0 3 1 3 2 3 3 5 तक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आगे 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है, 3 10 तक चेक करते हैं। तो दिस इज अ सीक्वेंस 0 1 2। कैन वी स्टॉप? नहीं, 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम से कम n तक पहुंचना है। 9 होगा, 1 n तक पहुंचना है। n तक पहुंचना मतलब सारा एलिमेंट कम से कम एक बार हम पार करके जाएंगे, है ना। सारा एलिमेंट हम एक बार पार करके जाएंगे। और टोटल सम क्या है? 2 3
2 3 4 5 है। टू टू भी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि एंड तक जाते तो 3 हो जाएगा सम। 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 2 है, 3 है, यहाँ से यहाँ 3 4, बट मेरे को वापस आना है। काम कर सकते हैं। 2 1 0 3 हुआ, इंडेक्स 1 पे आ गए। To stop at the last index, right? 4 पॉसिबल नहीं है। फोर कैन बी पॉसिबल अगर 2 0 1 हो। 3 3 हुआ, 4 हुआ, 4 ये पॉसिबल एक सिनेरियो है 1 0 का। फोर के लिए ये सिनेरियो है, बट बाकी कोई भी सिनेरियो इसको फेल कर देगा। 5 के लिए 2 3 1 3 3 5 5 के लिए 102 पॉसिबल है। 6 के लिए 0 1 2 3 4 5 6 6 के लिए पॉसिबल है। 7 के लिए आई थिंक ये 3, फिर जाके 3 समझा, उसको हम मॉड कर दिए बेसिकली। 3 व्हाट इज 3? एक आइटरेशन का कितना वैल्यू है? 3, उसके बाद जाके आ गया 0 1। इसके लिए एक बार फिर अब जाना भी तो पड़ेगा। थ्री, ठीक है, 4 4 5 6 हुआ। एक काम कर सकते हैं, 3 है, 4 5 यहाँ पे है, 6 7 हो गया, 102 कर सकते हैं। 3 not getting any idea. We use this.
देख, there's a lot of possible ways, but impossible करने के लिए I just want to obstruct something, right? I just need to obstruct something. Like if there's a certain configuration, like sort अगर कर दे, can we reach 4 in a certain way and reach the end? If you block the end with a something, we move the thing to the front 0, and most probably the person will try to be at the end in a iteration and trace back few more, right? If we mod, we need 2, and any configuration will give me more than 2, right? So here the head, right? Head of the loop, and while we move, we'll always have some 3, and this 3 mod 0, so we don't need anything, so just we will be at the end of the line, and nothing, we can arrange them and we won't need nothing. 3 mod 0, we won't need nothing. Sum is 3, so yeah, we can go away. When it's perfectly divisible by the available sum, then we don't have any these things like 10 and 1000 stuff. The sum is 3, and we mod it, and remainder is 1, and we just need 1 after the iteration. So sweep 3. Okay, so this says no config can stop her from achieving a goal. So 0 1 2, let's say this is basic, we can round about this up to 7, and I just move to the end. Okay, so same likely 1000. So why not 6? Why not 4, right? 2 is not possible, 3 is possible, 6 is possible, they can do it.
4 can't be done because can't we do 4 with, yeah, no, can't 4 be done, can't 2 be done. You see 2 to the power stuffs are being blocked. Anything else is possible, right? Zero, 1, 1 and 2 can be reached easily. It depends on the sum. The sum is right. Here I'm getting 2 more 3, 2 basically, and the 4 I'm getting 1. Sum is 3 and now to divide 4, 1 here. Can't I get and I think I've spent a lot of time in these. It's used tutorial. Oh, a lot of hints. Consider 2 easy cases where A is more than S and A is equal to S. A is more than S, ठीक है? This is S. Right. Talking about size of A or values. अच्छा, sum. Exactly. Exactly, that's what I was talking about. mod करने वाला चीज. So sum more है. The sum is more than S. So not possible, हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं and sum possible है तो हो जा रहा है. इतना this bit I knew. What if there is an index I such that अगर ये है तो कुछ भी possible है. We can rotate and अगर 1 है दोनों को मिला के तो फिर तो हम लोग कुछ भी रीच कर सकते हैं. But at the end you need to have the rest, right? कैसे भी अरेंज करो, they are trying to separate one. Because rest will increase the value.
To block something, we can put a 2 between them. We can separate 0 and 1, right? And even if they are together, बाकी बाद में जाके they are n तक पहुंचना है. If the sum it's still more, then no pattern matters, because in this case, if the sum is more than s, then no pattern matters. कुछ भी print करो, क्योंकि n तक पहुंचते पहुंचते s से ज़्यादा हो जाएगा and you have to reach n, ठीक है, बट बराबर है. तो एक आइटरेशन करो, कुछ भी पैटर्न हो, you will save it, right? So पहला thing is, if sum is more than s, always -1, क्योंकि order doesn't matter. एक बार आइटरेट करो and you reach the sum, ठीक है. If sum is equal to s, always -1, because same thing, sum बराबर है तो you can reach your goal, right? But अगर sum छोटा है, फिर भी we can do this back and forth and reach the sum. अगर sum more है, तो if sum is more, then print the pattern. Not possible for Alice, because if the sum is more, at least 1 से n तक तो पहुंचना ही है, और एक बार भी पहुंच रहे हैं, चाहे क्या भी ऑर्डर हो, sum will increase, sum s से ज़्यादा हो जाएगा, and that will lead to like sum more than s, and that's not a desired goal for Alice. So printing the same pattern without any alteration will make Alice not achieve a goal and Bob win. The same है तो doesn't matter what Bob does, ठीक है, या same है या divisible है, doesn't matter what Bob does, it will always sum to that thing. Okay, 2 cases हो गया. अब एक केस बचा है, sum is smaller than s. अब sum is smaller than s, then क्या है कि s में काफ़ी गिवन स्पेक्ट्रम सम्स छोटा है, बट उसमें बार बार लेफ्ट राइट मूव करके आई कैन अचीव एस. तो उसमें देखना होगा कि एक बहुत ही जनरल चीज़ है, इफ देयर इज अ पॉसिबल वे टू मूव एंड इंक्रीज द सम बाय 1, दैट विल गारंटी कि आई कैन रीच द सम one step at a time. So there's this configuration called ai plus a plus 1 equals to 1. Okay, then this is a dangerous combo that will help Alice win, but we can place this 0 and 1 strategically, right, and just move back and forth, and the sum will be reached at some point or later. We can move these things apart, 0 and 1, and then this leverage will also end. Okay, consider a case where sum जो है equals to s plus 1, and जो भी sum है is more than s plus 1. लास्ट हिंट है कि अगर मान लेते हैं कि आई वांट सम 4 है एंड एस इज एक छोटा,
and S is एक छोटा. Mm, S is एक छोटा, Sam is 3. उल्टा. This where sum is S plus 1. 3 या 4 होना चाहिए. ठीक है, मान लेते this is the case. Okay, I have total sum equals to 3 and S plus 1 equals to 3. And sum is more than S plus 1. ये दो केसेस ही बचा है. The sum is more than S plus 1, so जैसे ये sum है. दिया नहीं हुआ. So sum is more than S plus 1. S plus 1 is 4. तो 4 रीच करना है. Possible. Sum is more. तो total sum more हो जाता तो नहीं होगा. Apparently we talked about this here, right? And still I'm confused. Let's see. Talking about minimum path sum is the sum of the simple path from TK. Include TK. And the path sums basically. So the total path sum can be expressed as B sum plus D. And D is the addition sum contributed by 0 or more. S is less than D. No path sum can equal. Total sum is given more. So ठीक है, बराबर है तो Alice cannot be solved. सही. If S is only case is the given target sum is more than the available sum, possible sum. अब इसमें that D be equals to S minus these movements, that movements be extra thing. The extra sum that we want is D. अब if D equals to 1, we can rearrange the array to avoid adjacent sum pairs summing to 1. ठीक है, अगर extra 1 चाहिए तो हम लोग 0 और 1 ना हो पाए, sum 1 ना हो पाए, specifically placing all zeros at first, followed by all 2s and then all 1s. There's also no adjacent pairs to 1, making D equals to 1 unachievable. ठीक है. सही. If D is not equal to 1, no rearrangement can prevent Alice from achieving the path sum, since some of the adjacent pairs can cover all. D is more than 2. सही. अगर D 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, required sum, making D equals to 1 is unachievable. नहीं, अगर 1 नहीं है, 1 से बड़ा नंबर है, so कोई भी rearrangement जो है can prevent, no rearrangement can prevent Alice from achieving the path sum because since sum of adjacent pairs can cover all T, this is more than 2. Okay, this is the general thing.
Three cases, right? Okay, let's code it up. This was a difficult one. क्या क्या लिया गया? दो नंबर N S okay. एक्स्ट्रा कितना?
This one was difficult, yeah. This sticky decided or but extra this thing I couldn't think of. Let's submit. Yeah, got accepted. This one was a good problem. This one was a good problem. Let me mark this one. I just want to see the pathless. This one. Because a lot of people did it. Yeah, I couldn't think of it. I need more practice. Great. Okay, this was although it was recorded, I did learn a lot. The first one, the map thing. It was my second time that unordered map crashed in certain test case because it was designed to crash it. So the map was a great learning, and this case wise thinking is also a thing that I need to improve on. Okay, so okay, it was great stream. See you in the next one, and I hope my network recovers and I do live again.